Hey, good evening, everyone. Welcome to Permutations. I think, as you know very well, last class we just started the permutation and combination, right? Yes, ma'am. And we have Yes, gone ma'am. through the very first lecture. And what was the coverage of that? We have done the addition principle, we have done the multiplication principle as well. We have done the factorial notation. Along with that, we learned one trick for the ranking of the word, right? Yes, ma'am. That's great. So let's get started. We will try to cover as much we can do. It's not a fix that how much we have to cover. So these are the basically the topics that as a beginner you know about the permutation and combination rather than any advanced topic. No topic is there that will we say it's an advanced topic that will be a very important from the JEE because it's a basic for JEE point of view. Clear? Yes, ma'am. So let's get started. Importance was already told you regarding the JEE. So very first, what is combination? Can anyone tell what is combination? See, two things are there. One is permutation, another is combination, right? And they are interrelated. So let's say I have three things, A, B, C, right? Right, Harini? Yes, ma'am. If you can rearrange them, you will get 6 ways. Agree? But for combination selection matter, it means it's a one combination only A, B, C. It doesn't matter their order. Either A is first, either B is first or C is first. Clear? सबको ये बात क्लियर है जी कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन को. कॉम्बिनेशन के लिए क्या मैटर करता है कि भाई उसका सिलेक्शन क्या है और परमुटेशन में हम उसको दोबारा दोबारा से इधर उधर करके चीजें चेंज कर करके देखते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. So definition is given to you. Each of the different groups or selection which can be made by some or all the number of given object without reference to order. See, without reference to order in each group is called a combination. Clear? So what is a formula? It is denoted by NCR and formula is n factorial divided by n minus r factorial r factorial. Is it clear to you? So what are the Yes, actual ma'am. two words? Students got confused when to use combination, when to use permutation. So let me give you some clue words. What are that? A group is used, committee have to make, sample is taken, selection you have to make, or subset is taken. Group, committee, sample, selection, subset. When these words are used, then you say you have to use a combination formula. Clear? Yes. So we have basic problems on the formula. What is a formula? What NCR is equals to? This is actually equals to n factorial divided by n minus r factorial and r factorial. Clear? So very first formula is 10C4. As it was told you or teach you last time that 10C4 can be rewritten as 10 factorial, 6 factorial, 4 factorial. How to solve it? Is anyone going to put whole value of 10 factorial? Not at all, right? So there, what's the shortcut? You just write 10 into 9 into 8 into 7. That's it. Divided by 4 into 3 into 2 into 1. Yes or no? Yes, ma'am. So 4 to the 8, 3 3s are 9. So answer is 210. Option B. Any doubt? That's correct. हर्ष बिल्कुल सही है. किसी को भी इसमें डाउट है? No, ma'am. ठीक है. No, तो ma'am. नेहा, दिया, हरिणी, शिवरम, भाई किसी ने भी ये नहीं करना कि मैडम ने 10 फैक्टोरियल की वैल्यू बताई थी वो पुट करके देखे. भाई वो तो बेवकूफी हो जाएगी. क्या कहते हो? सही बात बोली Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर एनसीएन? इसको तो रट्टा भी मार लेंगे. एनसीएन इज इक्वल्स टू, if I have to take 5C5 or I have to take 5C0, they both are equals to One. one. क्यों? 1. n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल. ये तो गया. 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो आंसर 1 आएगा. क्लियर? Yes, ma'am. अब अगर जनरलाइज सोचो तो आप ये सोचोगे ना कि भाई ए बी सी तीन चीजें हैं,
तीनों को एक ही कॉम्बिनेशन लेना, तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ABC, दैट इज वन. क्लियर? Yes, ma'am. In how many ways can the select a 4-letter word in the English alphabet? How many English alphabets are there? 26. 26. Bilkul sahi. 26 are there. So you have to take 4. Select 4. So what should be the formula? 26 is C4. Right. So you have to see 26 C4. How I got to know? I have to apply C or P because they said select. I need to see how many ways I can select. Clear? Yes, ma'am. So 26C4, this can be solved as 26 factorial, 22 factorial, 4 factorial. It means 26 into 25 into 24 into 23 divided by 4 into 3 into 2 into 1. Is it clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Great. So, it's my favorite question. There are 12 friends, each greeted other by shaking hands. How many handshakes took place? So, tell me, how many of used to be a decent handshake like hello, how are you? Or how many used to do hello, hello, मतलब one, two at one time? What do you say? भाई कौन कैसे हैंडशेक करता है? आराम से एक टाइम पे एक जना करे या एक टाइम पे दो दो से? क्या कहते हो? कैसे हैंडशेक करते हो? असली वाला हैंडशेक कौन सा होता है? हाँ जी, असली वाला एक्चुअल वाला हैंडशेक कैसे होता है? When two persons handshakes at one time, what do you say? So 12C2 ना? क्या कहते हो बच्चों? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So how many committee of 5% of chairperson can be selected from 12 persons? So what should be the answer? Committee have to make. Committee means what formula? Neha, Aditya, Ritik? C5. Okay. बिल्कुल सही है जी. 12C5 I used to have to take. क्या कहते हो? Harini, 12C5 is the correct one. क्या 12C5 ही होगा? भाई 12C5 होगा या नहीं? स्टेटमेंट कितने लोगों ने पढ़ी? स्टेटमेंट कितने लोगों ने पढ़ी? 5 persons with one chairperson. It means how many person you have to select? 5 plus 1, 6 person you have to take. हाँ जी दिया, 6 बंदे लेने होंगे. नेहा, Harini. Yes, ma'am. So it means Yes, ma'am. answer should be 12C6. Clear? Yes, ma'am. The number of ways in which 6 rings can be worn on the 4 fingers of one hand. एक हैंड की 4 फिंगर्स पे कैसे रिंग्स पहनी जाएंगी? हाँ जी, सोचिए क्वेश्चन को फिर बताइए. सोचा कुछ? टाइम चाहिए? कितने लोगों को सोचने के लिए टाइम चाहिए बता दो. 2 मिनट चाहिए?
ओके So Harini's answer I got. Else everyone ready? Yes, ma'am. Okay. See, Harini, what's answer? Option A. Yes, ma'am. Option A, ma'am. Option A. So what's the actually concept? Do you think they said 4 fingers? It means one hand have 5 fingers. So 5C4. It means 5 ways are there to select a finger. What do you say? Then 6 Hello. can be born on the 4 finger. It means 6C4 into 5. So this should be the correct answer. Agree? क्या कहते हो? Everyone agree? Yes, ma'am. चलिए. The number of ways selecting 3 men, 2 women. 3 men select करने हैं, 2 women करनी है from किस में से? 6 men, 6 women से. So how the selection to be made? Ways of selecting, right? So क्या लगेगा बच्चों? बहुत सिंपल है. 6 में से 3 मैन लेने हैं इंटू 6 में से 2 मैन लेने हैं. बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. क्या कहते हो? ऑप्शन ए ही आ रहा है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. सो हरिणी, दिया, आदित्य, ऋतिक, एवरीवन, नेहा, आर्यन, क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक Yes, बार ma'am. दोबारा एक्सप्लेन कर Yes, दो. ma'am. क्या क्या क्या? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो. ओके दिया. ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई आपको सेलेक्ट करने हैं 3 मैन 2 वुमेन. ठीक है जी. किस में से करने हैं? टोटल 6 मैन है, 6 वुमेन है. तो 6 में से 3 लेने हैं, 6 में से 2 लेने हैं. तो हमने वही करा, 6 में से 3 ले लिए, 6 में से 2 ले लिए. जब सिलेक्शन 5 बंदों की पूरी होगी तभी मेरा क्वेश्चन खत्म होगा. अगर कुछ और भी होता तो साथ में वो भी मल्टीप्लाई होता ना. क्लियर? अब देखो, यस मैम. 9 फ्रेंड्स हैं, उनमें से 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं. ठीक. In how many ways he can invite them if there have to be exactly 3 girls in the inviting? कितने कितने वेज में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करे ताकि उसके इनविटेशन में एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 3 गर्ल्स हो सकती हैं. क्लियर? क्या क्वेश्चन समझ आ गया जी? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? No, ma'am. नहीं क्लियर. बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 9 फ्रेंड्स हैं. मान लो कि आदित्य आपके 9 फ्रेंड्स हैं. ठीक है गौरव? 9 में से 4 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं और आपको अपनी किसी बर्थडे पार्टी के लिए फ्रेंड्स को बुलाना है.
और आपका एक क्लोज है कि ये 3 जो गर्ल्स हैं ये मेरी पार्टी में आएंगी। उसके बाद अब आपके पास उन्होंने ये तो बोला नहीं कि कितने फ्रेंड्स को बुलाना है, ऐसा तो कोई नहीं दिया ना. इट इज नॉट गिवन दैट हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव टू इनवाइट. इज इट गिवन, हरिणी? No, ma'am. सो इट मीन्स इट कैन हैपन मैं 0 बॉय को बुलाऊं, इट कैन हैपन मैं एक ही बॉय को बुलाऊं, इट कैन हैपन मैं 2 बॉयज को बुलाऊं या 3 को बुलाऊं या 4 को बुलाऊं. तो मेरी ऑप्शन क्या रहेगी? मैं ऐसा बोलूंगी ना 5C3, ये तो आएंगी 3 गर्ल्स, 5 में से 3 गर्ल्स तो पक्का ही आएंगी. क्लियर? अब हो सकता है कोई बॉय ना बुलाऊं, हो सकता है एक बॉय बुलाऊं. इट मे हैपन अपनी 2 बॉयज कैन बी इनवाइटेड, 3 बॉयज कैन बी इनवाइटेड और 4 के 4 बॉयज कैन बी इनवाइटेड. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर बनेगा बच्चों. हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? एनी कंफ्यूजन? कैन बी मूव हेड? Yes, ma'am. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया. मैंने आपको बताया था ना कि NC0 और NCN बराबर होते हैं और दोनों का फॉर्मूला 1 होता है. ठीक है जी. इसका मतलब NCR NCN माइनस R बराबर होते हैं क्या? NCR प्लस NCR माइनस 1. अगर से मतलब देखिए, ध्यान से देखिए, NCR म्यूट कर लीजिए जिसका माइक ऑन है. So if I have 10C3 plus 10C2, so this will be equals to 11C3. Clear? Yes, ma'am. Okay. So NCX is equals to NCY. If these two coefficients are equal, combination formulas are equal, it means it might happen X is equals to Y or X plus Y is equals to N. Very important formula. Clear? NCR divided by NCR minus 1. That means NC 10C3 divided by 10C2 if you have. So this must be equals to 10 minus 3 plus 1 divided by 3. Clear? Clear to all? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So noted these 4 formulas. In fact, one more is there, that is 5th one. So important, noted all the 5 formulas. What these are the important properties of NCR. So if I have, let's say, NC3 is equals to I can say NC3 is equals to NC4. So what you will say? You say X and Y are not equal. It means N is equals to 3 plus 4. So value of N should be 7. Formula is clear? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Anyone having any doubt? No, ma'am. Okay. So now see, I have the formula. Remember, NCX is equals to NCY, right? So either X is equals to Y, but this is not equals to Y. So this implies N is equals to X plus Y. Agree? Yes, ma'am. So N is equals to 8 plus 2. That means 10. So I need to evaluate 10C2. It means 10 factorial divided by 8 factorial. 40, ma'am. So 10 into 9 divided by 2. So 45 is the correct answer. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone having any doubt till No, there? ma'am. No, ma'am. Okay. So solve this question, be quick. Hi Gurmannath. Hi Ritu. Deva Youth. ऑप्शन डी मैम. ओके, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट जी, बिल्कुल डी करेक्ट है.
So सबका आंसर आया जी 12. Clear to all? Yes, ma'am. Okay. So can you see the next question? Visible? Ready to implement? Take your time, 2 minutes of time to solve this question. Option number D, ma'am. Okay. Option D got the answer. Option C. Okay. C, ma'am. C. So which property is used? I think that one NCR plus NCR minus 1, right? That must be equals to N plus 1 CR. Is it so? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If I use this property for them, so it will be NC7 should be greater than NC6, right? So X and Y are not equal. So N must be greater than 7 plus 6. So N is greater than 13. Is it so? So why I didn't include equality? I just taken greater than sign, not equality. Why so? Because it's not given to me. And in fact, if they are not equal, quite sure that n is not equals to 7 plus 6. Clear? Yes, ma'am. So now let's move ahead with the permutation. So what is permutation? Permutation is arrangement that I told you. Let's suppose we have three letters A, B, C. This is one arrangement. If you rewrite it as B, C, A, it's a second. Then you can rewrite it as A, C, B, and so on. Like this, we will get six arrangements, different arrangement with the same letters. So they are called permutation, right? So this is basically clue words are arrangement, schedule, order, and denoted by P. So NPR is equals to n factorial divided by n minus r factorial. Yes or no? Yes, ma'am. Clear? So formula is quite clear. So what is the value of 8p5? So 8p5 is equals to 8 factorial divided by 3 factorial. So 8 into 7 into 6 into 5 into 4. And you need to solve this part. Clear? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. To solve this question, 10PR is equals to 5040. Ready? नोबिता, आप कौन हो बच्चे? आपका क्या नाम है? नोबिता तो किसी का नाम नहीं हो सकता डोरेमोन के बिना. क्या कहते हो? नोबिता हिटाची. ओके.
मोहित सर, एक थोड़ा फेक एंट्री का बच्चा है नोबिता, क्या रिमूव कर दो उसको? चला ही गया। चलिए, यस बच्चों बताइए कैसे करेंगे? सॉल्विंग? Yes, ma'am. यस बच्चों, डन। आंसर आया? नहीं? यस, क्या कहते हो? मैम 4। 4 आंसर आया, ओके। भाई देखिए, आपने इसको करा होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट? दैट इज इक्वल्स टू 5040। एग्री? यस मैम। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया? क्या हम करा? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 504 है। 10 फैक्टोरियल को पूरा का पूरा? नहीं मैम 10 इंटू 504 लिख देंगे ना उसको। बिल्कुल परफेक्टली बच्चे, क्योंकि ऐसे करने में तो बहुत टाइम जाएगा। हमने ट्रिक पढ़ा था, 10 PR बोल रहे हैं, तो भाई इसको 504 इंटू 10 लिख ले। और मेरे को दिख रहा है कि 10 इंटू मैं 9 इंटू 8 इंटू 7 लिख सकती हूँ, देख पा रहे हो? ठीक, तो इसका मतलब मैं इसको 10P4 लिख लूं तो चलेगा? सो हरिणी, R should be 4. What do you say? Yes, ma'am. दिया? Yes, ma'am. Yes, mom. ऋतु? आदित्य? नेहा? अवनी? क्लियर टू ऑल? Yes, mom. पूजिता? ओके, चलिए फिर। अब मेरे पास कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। व्हाट आर दैट केसेस? द नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, द नंबर ऑफ ऑल द परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन एट ऑल टाइम। सी भाई, अब इसको सीखो कैसे करना है। हाउ मेनी 3 digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? No digit is repeated and 3 digit number. See, 1 2 3, 3 digit number is required.
1 to 9, how many digits are there? 1 to 9, how many digits are there? 9 only, na? So you can say 9 into 8 into 7 if no digit is repeated. So just solve this. You will get 504 as answer. Yes. Yes, ma'am. If I said repetition is allowed, let's say repetition is allowed. So अगर repetition allowed होगा बच्चों तो आप क्या बोलोगे कि 3 digit नंबर में हर किसी के पास 9 ऑप्शंस हैं, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा. दैट मीन्स आंसर शुड बी 7 to 9. व्हाट यू से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear to all? See now, number of different 3-letter words can be found from the letter of word number, right? Which letter? Number. Okay. So number में कितने letters है बच्चे? 1 2 3 4 5 6, right? 3 letter का word बनाना है तो 6 into 5 into 4. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So can anyone tell me what will be the rank of number if we arrange as a dictionary? फटाफट बताइए. Let me check last class. देखते किस किस ने लास्ट क्लास जो एब्सेंट थे उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी थी या नहीं. शिवराम, समीर, वत्सल, सुल्फिकर, क्या कहते हो? रेडी? नंबर का रैंक बता दीजिए. हाँ जी, आया नंबर का रैंक. क्या करा होगा? नंबर को लिखा होगा नंबर. E got the first rank, B got the first rank, then B, then M, then N, then 4, then 5, then 6. Is it so? How many numbers are lesser than 4 on the right side? 3. Less than 6, 4. Less than 2, 3, 2. Less than 1, 0. Less than 2, 0. Less than 5, 0. Agree or not? So it should be 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5. याद आया सबको? हाँ ठीक है. तो भाई ऐसे थोड़ा बड़ा सा नंबर आएगा, सॉल्विंग हो जाएगी सबकी. बढ़ू आगे. Yes, ma'am. तो फटाफट बताइए, हाउ मेनी इफ वी यूज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिफ्ट. इससे पहले क्या कर रहे थे? हमने बोला था हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे. या तो आप एन में से आर ले रहे हो या एन की एन ले रहे हो. तो भाई अगर एन की एन ले रहे हो तो आप क्या लगा सकते हो? या तो आप सीधा लगा लीजिए एन फैक्टोरियल या फिर आप लगा लीजिए एन पी एन, कैसे भी कर लो. तो यहाँ पे कितना एन की वैल्यू कितना है बच्चों? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एन इन दिस क्वेश्चन? How many total letters are there in the gift? 4. Answer should be 4 factorial. And maximum of you already crammed the value of 4 factorial. What is that? 24. तो 24 सबका आंसर आया. Yes, ma'am. Great. चलिए. How many 4-letter words with or without meaning formed out of the letters of the word logarithms if repetition is not allowed? सबसे पहले देखिए कि मेरे पास कुछ repetition हो रहे हैं मेरे पूरे लेटर में. क्या हो रहा है logarithm में repetition किसी लेटर का? No, ma'am. नहीं हो रहा. तो No, ठीक है. ma'am. तो आपके टोटल देखिए कितनी है, उसमें से 4 सेलेक्ट कर लीजिए. फटाफट आंसर बताइए.
How many total letters are there in the logarithm? Yes, बच्चों. Ready answer? Yes, ma'am. So what's the answer? 5040. अरे करेक्ट, वंडरफुल. इट मीन्स 10 में से 3 लिया, 10p4. सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. कुछ कैलकुलेशन हमें याद हो जाती हैं. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. ये आपको पता है 5040 है. 4 है. तो 5040 आंसर आपका होगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम. अरे वाह. अब मेरे पास आता है अलाइक ऑब्जेक्ट्स. कितने लोगों ने ये सुना है अलाइक ऑब्जेक्ट्स? देखो बच्चों, सपोज करो मुझे नेहा के लेटर को परमुटेट करना था. नेहा के सारे लेटर लेके जितने भी बनते हैं तो आप ले लोगे. तो कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल बनेंगे. Yes, ma'am. लेट्स से वी हैव ना अनदर नेम अवनी. तो भाई जब अवनी के नाम की बात करोगे तो उसमें ए जो है वो रिपीट हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. तो कितने लेटर्स टोटल हुए? 3. 5. सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हुए उन्हीं पे कैंसिल कर दो एक जैसे. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. लाइक हरिणी, HARINI. तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. बच्चों Yes, ma'am. क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. अब देखो हमारे पास एक नाम और है गुरमन्नत. देखिए बच्चों, मैं ऐसा कुछ नाम देख रही हूँ जिसमें मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार. a कितनी बार हुआ? 2 बार. क्लियर? Yes, ma'am. यस. क्लियर टू एवरीवन? तो ये होती है हमारी परमुटेशन. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गूगल, है ना. तो भाई गूगल को अगर परमुटेट करना हो तो क्या करेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. वंडरफुल, दैट्स इट. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है जी. अब मेरे से किसी बच्चे ने लास्ट टाइम एक चीज पूछी थी कि मैम अगर किसी में कोई लेटर्स रिपीट होते तो हम रैंक कैसे निकालते? याद आया? मैंने बताया था जब हम परमुटेशन एक जैसी कर लेंगे तो हम बात करेंगे. रिमेम्बर? Yes, ma'am. तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक. मान लीजिए मुझे गूगल को ही करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज. तो सबसे पहले क्या आएगा? 1, फिर 2, 2, फिर 3, 4, 4. क्लियर? So how many letters are lesser than 2? 1 only. 4 से lesser कितने हैं बच्चों? 4 से lesser 3. 4 से lesser 3. and 2 से lesser 1. 3 से lesser 1 और 1 से lesser 0. Agree? Yes, ma'am. अब क्या करोगे? सेम करोगे. 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से नागी. ठीक है जी. सो 1 1 2 3 4. 4 से लेटर कितने छोटे हैं? 4. लेकिन उसमें से 2 1 एक जैसे आ रहे हैं बच्चों. 2 1 एक जैसे आ रहे हैं या नहीं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डिवाइडेड Yes, बाय ma'am. 2 फैक्टोरियल, 1 से छोटा 0, 1 से छोटा 0, 2 से छोटा 0, इससे छोटा 0. सो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. क्या सबको बात समझ आई Yes, ma'am. कि रेपिटेशन में कैसे काम करेगा आपका ये ट्रिक? क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने जो एक तरीके से ऑल बेसिक्स ऑफ, ध्यान से सुनिए, हमने एक तरीके से ऑल बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लिया. ठीक है जी. तो अब मेरे एंड से जो आप लोगों को टास्क असाइंड है वो ये है कि बच्चा पार्टी, कंसेप्ट आपको पता चल गया कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता चल गया? ये सर नो? Yes. रैंक की प्रॉब्लम्स आपकी हो गई हैं. अब आपको ma'am. करके क्या आना है, अगली वाली क्लास से पहले आप लोगों को अपने सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कौन से सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करके आना है. और आपका अपकमिंग टेस्ट पता है ना क्या है? Yes, ma'am. मैथ्स का सिलेबस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहा है और संडे को सबने टेस्ट अटेम्प्ट करना है. टेस्ट करने के बाद मेरे को फोटो भी शेयर करना है. एग्री? Okay. ठीक है, दैट्स ग्रेट. तो भाई अभी अगली वाली क्लास में जो हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो उसमें हमारे पास बहुत सारे नए नए ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होंगे. हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ही आगे लेके बढ़ेंगे और इसमें जो हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जो अपन बोलते हैं कि जेई जो पूछता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. क्लियर? Yes, ma'am. तो क्योंकि उससे पहले आप लोग सब बेसिक करके आओगे, चलेगा सबको? एनीवन, एनी डाउट टिल देयर? No, ma'am. हरिणी, अवनी, हरिणी,